Welcome, ladies and gentlemen, to Immigration and Settlement Show on Voice of Toronto TV. नाजरीन, आज हम लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में हम HMB कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म से। यहाँ पर हम लोग आज आप लोगों के लिए बहुत सी नई एक्साइटिंग न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज़ बताने वाले हैं। आज हम लोग आपसे बहुत ही अच्छी बातें करेंगे। आज हमारे पास एक बहुत नया सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमारे साथ शो पे द फाउंडर एंड द CEO ऑफ HMB कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म डॉक्टर हिलिया बेगन मौजूद हैं, और हमारे इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजर मिस्टर आमिर अली आज हमारे साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट लूशिया के बारे में। ये कैरेबियन आइलैंड कंट्री है। यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज हम इस बारे में बात करते हैं। सो आइए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। सो शुरू करने से पहले डॉक्टर बेगम, सो हाउ वाज योर डे टुडे इन द ऑफिस? It was very good. It was very productive, I'm sure? Yes. Okay, that's really good. So Dr. Begum, we have a very special subject to talk about, and it's about St. Lucia. First, tell us where is St. Lucia located? Hello, everyone. St. Lucia is the island. It's in North America, right? Yes, it is. Yeah, because we were arguing, is it in north part or east or center? So it's 3 and 40 minutes away from Miami, Florida. Okay, so basically नाजरीन, डॉक्टर बेगन हमें बता रही हैं कि सेंट लूशिया जो है वो नॉर्थ अमेरिका के टेरिटरी के नीचे आता है, और वहाँ फ्लोरिडा मायामी से 3 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट का डिस्टेंस है टू सेंट लूशिया। So what country does St. Lucia belongs to? That's the second question. You're asking me, or you want me to explain it? I'm asking you a question. Okay. So it used to be part of the British wealth, but still part of the UK, but independent island right now. Okay. So नाज़रीन, सेंट लूशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। ये शुरू में 1967 में एज अ ब्रिटिश कॉलोनी रखा जाता था, और उसके बाद ये 1979 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, बट ये एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मेंबर है, which is something यानी एक इंटरनेशनल रिकग्निशन इस कंट्री को मिली हुई है। So Dr. Began, if I ask you the further question, so sure, sorry to cut you off. Let's Amir explain it in Farsi, because we have a lot Farsi. of questions. No, we have Farsi viewer as well. Oh, of course, of course. So it's better that he can explain about St. Lucia in Farsi, that we can. Then we can continue. Okay, Mr. Amir Ali. خانم آقایان، درود فراوان بر شما. امشب می‌خوایم راجع به سن لوشیا با شما صحبت بکنیم. سن لوشیا جزیره‌ای هستش که در کربیان واقع شده. از تقریباً 3 ساعت و 40 دقیقه فاصله داره از فلوریدا میامی و خیلی نزدیک به باربادوس. در سال 1967 قسمتی از انگلیس حساب می‌شده، ولی الان مستقل حساب میشه، یعنی از 1979 دیگه مستقل شده، ولی هنوزم جزو دارایی‌های انگلیس محسوب میشه. Okay, so Dr. Begin, what is the language of St. Lucia? The main language the people speak over there, it's English, but they have St. Lucian French as well. Okay, so basically they have their own dialect of French. Yes. Okay. तो नाजरीन, सेंट लूशिया की जो कंट्री है, इसमें जो मेन ज़बान बोली जाती है वो है इंग्लिश, और इनके अपनी एक सेंट लूशियन फ्रेंच है जो फ्रेंच ज़बान है, लेकिन वो सेंट लूशियन डायलेक्ट
उन्होंने उनका है जिसपे वो आगे वो आपस में बात करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी वहाँ पर है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही गवर्नमेंट में चलती है। सो आइए इसी के साथ अब हम अपना दूसरा सवाल पूछते हैं, इज सेंट लूसिया अ सेफ कंट्री? Of course, is one of the safest Caribbean island. Okay. Yes. So, so नाज़रीन, सेंट लूसिया जो है वो सेफ्टी के तौर पे बहुत ही सेफ कंट्री है। इस कैरिबियन आइलैंड्स में सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री सेंट लूसिया को माना जाता है। So, my next question, my consequent question would be that why St. Lucia is suitable for immigration, and why are we discussing it today over here? Our viewers want to know. Well, those days, because of the political situation in different countries, especially Middle East and Western countries, whoever are interested to get their citizenship and the passport, the most important thing is St. Lucia is one of the Caribbean islands that will give the applicant and the family the citizenship, permanent residency and the citizenship and the passport within 3 to 6 months. So instead of waiting for a long time to get another permanent residency of another country, people can apply for St. Lucia to get their passport, because the passport of St. Lucia helps people to travel to the 147 different countries. And the good news is since June the 6th, 2003, immigration and the citizenship and the government of Canada announced that whoever holds the St. Lucian passport, they don't need to get a visa to come to Canada. So this is the most important reason that we start talking about it. We know so many people, even right now, Afghani people or Ukrainian, Pakistani people are waiting for a long time to become a Canadian permanent resident or apply for the refugee asylum. So this is another way that they can get the St. Lucian passport in order to be in a safe place to live. Okay. नाज़रीन, so नाज़रीन, डॉक्टर बेगन हमें बता रही हैं कि ये सेंट लूसिया के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सेंट लूसिया एक ऐसी कंट्री है जो आपको नेचुरलाइजेशन करती है, आपको अपनी नेशनलिटी देती है, आपको वहाँ पर सिटीजनशिप देती है, आपको वहाँ का पासपोर्ट इशू करती है। वो पासपोर्ट जो 147 कंट्रीज़, 147 कंट्रीज़ में ऑन अराइवल उनको एंट्री मिलती है। और ये दुनिया और 6 जून से कनाडा में कोई भी सेंट लूसियन नेशनल है वो अब यहाँ पर बगैर वीज़े के आ सकते हैं, जा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी है, ये तरीका है लोगों के लिए, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढना चाहते हैं, वो इमिग्रेट करना चाहते हैं, तो सेंट लूसिया उन लोगों को वो ना ओनली कि वो अपना पासपोर्ट देते हैं, वो आपको अपना नेचुरलाइजेशन करते हैं और वहाँ पर वो आप लोगों को अपनी एक अपना हिस्सा बनाते हैं, जहाँ पर आप पूरी दुनिया का ट्रैवल ओपन हो जाता है। Mr. Amir Ali, would you want to translate that, please? صحبتی که شد این بودش که زبون اول که تو سنت لوشیا صحبت میکنن چیه؟ اونا به زبان انگلیسی صحبت میکنن، زبون اولشون انگلیسی هستش، زبون دومشون سنت لوشیا فرنچ هستش. سوال دیگه ای که پرسیدن این بودش که سنت لوشیا سیف هستش برای زندگی؟ بله، سیف هستش برای زندگی. و سوال دیگه ای که شد این بودش که نسبت به اون چیزی که الان کشورهای دیگه هستن و دارن سیتیزن میشن داخل کشورهای دیگه، مردم از کشورهای دیگه میان، از 6 جون از 2023 کسایی که پاسپورت سنت لوشیا رو دارن احتیاج به ویزای ورودی به کشور کانادا رو نخواهند داشت
و فقط میتونن الکترونیک ویزا رو بگیرن، یعنی ای ویزا رو فقط $7 بگیرن و وارد کشور کانادا بشن. سندروشا یه مزیتایی داره که شما وقتی که سیتیزن میشین و پاسپورت سندروشا رو دریافت میکنین، نسبت به اون چیزی که هست 147 تا کشور رو شما میتونین بدون ویزا بهش ورود کنین. Okay. So even they can come to Canada, whoever holds the passport of St. Lucia, they can travel to Canada, they can apply for the work permit easily, they can work in Canada, and they can study in Canada, so there is no limitation to come to Canada. So नाज़रीन, डॉक्टर बेकर ने हमें बताया कि अगर कोई भी शख्स सेंट लूशिया की नेशनलाइजेशन ले लेते हैं, उनको कनाडा में आना जाना, यहाँ का वर्क परमिट लेना, यहाँ पर स्टडीज़ करना, वर्क परमिट लेना, हर चीज़ उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर फिज़िकली आ सकते हैं ऑन अराइवल, और यहाँ पर आप लोकली अपने जो भी आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपने एप्लीकेशन देनी है तो वो ज़्यादा इजी होता है। और याद रखिएगा कि हम HMB कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। जिस तरह की खिदमत भी आपको इमिग्रेशन में चाहिए, आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं 905-604-0405 पे, 416-836-9911 पे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-855-5462। आप हमसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की भी इमिग्रेशन में आप लोगों को हेल्प चाहिए, हम लोग हमेशा यहाँ पर हाजिर हैं। So, Dr. Began, so my next question is another consequent question from your last statement. So what kind of immigration facilities are offered by the St. Lucian government? First is permanent residency, and then citizenship along with the passport. So it's not exactly like other Caribbean island that they just offering the passport for 10 years, and then after 10 years they have to renew the passport, and we don't know, and we don't know even the government of the different Caribbean island will renew their passport or not. This is the only Caribbean island that they offer permanent residency and the citizenship. Okay. नाज़रीन, सो डॉक्टर बेकर ने हमें बताया कि जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रही है सेंट लूशियन गवर्नमेंट वो है परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, और कैरिबियन आइलैंड्स हैं जो अपने पासपोर्ट्स आपको देते हैं जो 10 साल बाद आपको रिन्यू करवाने होते हैं। तो 10 साल के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं है या कुछ पता नहीं है कि वो आगे जाके रिन्यू होंगे या नहीं होंगे, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन सेंट लूशिया एक ऐसी कंट्री है जो आपको सिटीजनशिप देती है, आपको वहाँ का पासपोर्ट देती है, आपको अपना बाशिंदा बना लेती है। सो आप वहाँ के इमिग्रेशन के फ़ायदे भरपूर उठा सकते हैं। पूरी दुनिया में 147 कंट्रीज़ आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। सो डॉक्टर बेगन ने हमें ये बताया। So, you wanna let him to explain? Oh yes, please, Amir Ali. کسانی که به سنت لوشیا میان به دو صورت میتونن بیان، هم به صورت پرمیت رزیدنسی و هم به صورت سیتیزنشیپی. وقتی که سیتیزن میشن پاسپورت سنت لوشیا رو دریافت میکنن، باز اینا ما تکرار میکنیم که به 147 تا کشور میتونن سفر کنن بدون ویزا. بیخی خوب دیگه. Right. So, Dr. Began, if I ask you the next question is that why do you think St. Lucia is a better option in the Caribbean islands? I think you already asked me the same question. No, like it's a question like why do you think it's a better option? Somebody can get a passport only and travel or whatnot. Can you just explain to our viewers that why exactly that we are explaining them to about St. Lucia? One, because St. Lucia government is offering the citizenship, permanent residency and the citizenship. Mm-hmm. And the most important thing that is distinguished from the different countries, mm-hmm. From different Caribbean islands, is they can, the main applicant can apply for a spouse,
their children, the children under 21, and even this law and regulation happened this year. So the St. Lucia government announced that even children over 22 years, but they have to be financial dependent on the main applicant or the father and mother. They can get the passport as well. The interesting thing is the father of the mother of the spouse and the father of the mother of the main applicant, if they are over 55 years old, they can be on the same application. Wow. Yes. Wow, that's a good news. नाजरीन, तो डॉक्टर बेगन ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है. डॉक्टर बेगन बता रही हैं कि कोई भी ये जो सेंट लूशिया जो कंट्री है जो आपको नेचुरलाइजेशन दे रही है, जो आपको पासपोर्ट्स दे रही है, बेसिकली ये कंट्री सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या जो भी इस जो एप्लीकेंट है उसको तो नेचुरलाइजेशन दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को भी, और जो बच्चे अंडर 21 हैं डिपेंडेंट हैं, और जो 21 से ज़्यादा भी हैं लेकिन फाइनेंशियली अपने पेरेंट पे डिपेंड करते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं. पासपोर्ट उनको, वहाँ की नेचुरलाइजेशन भी उनको मिल सकती है. और नॉट ओनली दैट, जो एप्लीकेंट है उनके वालिदैन भी नेचुरलाइजेशन पासपोर्ट ले सकते हैं, एंड एप्लीकेंट की जो स्पाउस है, जो उनकी बीवी हैं, उनके भी पेरेंट्स को वहाँ का नेचुरलाइजेशन और पासपोर्ट वहाँ की मिल सकती है, और वो इस चीज़ के फ़ायदे उठा सकते हैं और वो पूरी दुनिया में घूम सकते हैं. 147 कंट्रीज़ भी उसमें शामिल हैं. एंड ये रिसेंटली, इट वाज रीसेंट, राइट? For the like, you know, when they're including the parents of both the applicant and spouse. Yes, everything, especially the kids over 21. Right. And also, just want to mention this, that even their sibling can be under this application as well, if they are not married. Yes. So नाज़रीन, ये तो डॉक्टर बेगन ने ये सोने पे सुहागा वाली बात कह दी है कि सिर्फ वो ही नहीं कि पेरेंट्स जो एप्लीकेंट के अनमैरिड सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी नेचुरलाइजेशन और पासपोर्ट यहाँ का ले सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं. इट्स नॉट दैट कि सिर्फ किसी तक लिमिटेड है, जो भी इन एप्लीकेंट के सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं. Amir Ali, if you can translate that. دقیقاً به چیزی اشاره شد که چرا باید به کشور سنروشا، به جزیره سنروشا مهاجرت کرد. به خاطر اینکه سنروشا پیشنهاد میکنه برای PR و سیتیزنشیپی و کسانی که شامل حال چه کسانی خواهد شد، کسانی که دقیقاً کریمینال ریکورد نداشته باشن، یعنی سوء پیشینه نداشته باشن، و بچه‌های زیر 21 سال و فرزندانی که بالای 22 سال هستند، 22 تا 30 سال، و هنوز از نظر مالی از طرف پدر مادر ساپورت میشن، و متقاضی میتونه پدر مادر خودشو بیاره و همچنین برادر و خواهر مجرد رو، و تاکید میکنیم پدر مادر خودش رو و برادر و خواهر مجردش رو میتونه بیاره. Even the spouse. Yeah. Yes. The spouse also. The spouse's brothers and sisters and mother and father. No, he just mentioning that. من این رو به فارسی خودم میگم چون من فارسی صحبت میکنم. چه متقاضی و چه همسر متقاضی میتونن پدر و مادر خودشون رو هم روی این اپلیکیشن داشته باشن. Right. So, you done? Yes. All right. Right. So, so like my next question would be, so like we asked, like you were telling me that like they have this, like, you know, the immigration policies. So I just want to know a little deeper, is like what kind of programs are offered by the St. Lucian government? St. Lucia offers 3 different programs. One is government bond. The minimum start with 250,000.
And the second one is investors, and that they can invest, and it's non-refundable. The minimum start with 100,000, and the last one is if they buy a real estate in St. Lucia, the minimum of 300,000. ओके नाजरीन, अभी हमारा हुआ है एक वक्त ब्रेक का, सो हम लोग ब्रेक लेते हैं। उसके बाद आके ये जो इतनी इंटरेस्टिंग बात है डॉक्टर बेगम हमें बता रही हैं, मैं आप लोगों को सारी कन्वे करता हूं। हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमें देख रहे हैं टोरंटो टीवी, वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी लाइव पे, इमिग्रेशन एंड सेटलमेंट शो, HMB कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve Canada. So it's combination of and silver shades, so Venus shades.
So, or the Shangri-La shade. So it's a very unique and new product in different colors. If you would like to see how it works, just see over here. You have to pull it down. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. However, when your mood changes, what you can do, just pull it down. It gives you 100% privacy, and it will control also ultraviolet rays control. You want to see out, what is a see view, just pull it again. This is our very newest product. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Thank you very much to visit Pan Am Blinds. Well, looks like you got some great stuff for your new home. Yes, that makes me happy. Happy? Then why aren't you smiling? I am smiling. Nazreen, welcome back to Immigration and Resettlement Show here on Voice of Toronto TV. We are here from HMB Canadian Immigration Firm. We are talking about today St. Lucia. So Nazreen, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, हम उस बारे में तो अपनी बात कंटिन्यू करेंगे. जैसे अभी आप लोगों ने देखा, सेंट लूशिया की जो एड चल रही थी, आप लोगों ने उसको ज़रूर आपको देख के अच्छा लगा होगा. अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ आप हम लोगों से रब्ता करें, एंड हम आप लोगों को इस चीज़ में जो भी फैसिलिटेट कर सकेंगे हम आपको करेंगे. तो हम अब अपने शो की तरफ वापस बढ़ते हैं. आइए सवाल पूछते हैं. जो लास्ट सवाल हमने पूछा था वो हम दोबारा पूछेंगे ताकि फिर वो आप लोगों तक मैं खबर पहुँचा सकूँ. सो डॉक्टर बेगम, like we were talking about what kind of programs St. Lucia is offering, what kind of program to get citizenship. So you were telling me about that. Okay, St. Lucia is offering 3 different programs. One is whoever wants to buy government bond for the minimum start from $250,000. And the other one is just a real estate. The minimum, whoever wants to invest in real estate, they can buy a real estate over there. The minimum is $300,000. And the other one, the last one is the investment program that they can invest. The minimum is $100,000. So it's non-refundable. नाज़रीन, सो डॉक्टर बेगम ने हमें यहाँ पर बताया कि 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं जिसमें सेंट लूशिया की आप सिटीजनशिप अटेन कर सकते हैं, वहाँ का PR भी ले सकते हैं. नंबर 1 है गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड अगर आप परचेज करते हैं तो वो है $250,000 के आप वहाँ के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदें और वहाँ पर आप अपनी नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं. दूसरा तरीका है रियल एस्टेट परचेस करने का. जो रियल एस्टेट परचेस करने का है वहाँ पर है मिनिमम $300,000 कि आप वो $300,000 की आप वहाँ के रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करें तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हैं. और जो तीसरा तरीका है वो है नॉन रिफंडेबल डोनेशंस का. जो तो नॉन रिफंडेबल डोनेशन है वो है $100,000 की. अगर आप वहाँ पर नॉन रिफंडेबल $100,000 की डोनेशन करते हैं वो आपको नॉन रिफंडेबल है और आप इस प्रोग्राम में
इंटर हो सकते हैं और अपनी सिटीजनशिप एंड वहाँ की आप पासपोर्ट अटेन किया कर सकते हैं. सो हमने बताया आप लोगों को तीन प्रोग्राम्स के बारे में. Sure. Sorry about that. Remember we were talking about the difference between St. Lucia and different countries like Turkey. People are investing money in Turkey in order to get the Turkish passport. Exactly. Right now, since last year, the government asking for 400,000 to invest in real estate, buy a property in Turkey, right? But they cannot sell it within next 5 years. And after, if they decided to sell their property in Turkey, they have to they buying it with the US dollar, but when they are going to sell the property in Turkey, they have to get their money from the seller. Turkish lira. Yeah, Turkish lira, right? Yeah. Here is different, so that's why we are offering to people whoever are interested to get an easy citizenship and a passport of different country. In St. Lucia, the minimum investment $300,000, and they can rent their place if they don't want to stay in St. Lucia. There is no obligation for it that the investors have to live in St. Lucia, and after 2 years even they can sell it. After 2 years. Yeah, after 2 years they can sell it. So नाज़रीन, यहाँ पर डॉक्टर बेगन ने हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि फॉर एग्जांपल हमारी चंद दिन पहले बात हो रही थी तुर्किश इन्वेस्टमेंट के बारे में कि वहाँ पर आपने मिनिमम $4 लाख आपने इन्वेस्ट करने हैं और वहाँ पर वो 5 साल के लिए आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, और जब भी आप उसे 5 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपको जो टेंडर ऑफ पेमेंट है वो आपको तुर्किश लीरा में किया जाएगा. यहाँ पर सेंट लूशिया में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. आप 2 साल बाद वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को लेते ही किराए पे चढ़ा सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंट आपको कोई बाउंडिंग नहीं है. एंड वहाँ पर आप जाके अपनी नेशनलाइजेशन लेके फिर आप ट्रैवल करें, आप जो करें उसमें आपको सबसे ईजीएस्ट तरीका एक अच्छी कंट्री के नेशनलिटी लेना और वहाँ पर सेटल होना या आपकी दुनिया में ट्रैवल करना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो सकता है. Amirali, if you can translate that, please. راجع به سندوشا 3 تا پروگرام مختلف ما خواهیم داشت. یکی گاورمنت بانده که $250,000 آمریکایی باید بذارن. دوم توسط اینوستمنت که برگشتی نداره برای دونیشن که مینیمم $100,000 آمریکایی باید بذارن و سوم ریال استیت هست که $300,000 باید بذارن. این 3 تا برنامه برای سندوشا هستش. حالا ما یه تفاوتی رو می‌خوایم راجع به کشورهای دیگه با سندوشا بهتون بگیم. مثلا کشور ترکیه شما باید $400,000 آمریکایی تاکید می‌کنم بذارین، 5 سال اونجا باشین، بعد از 5 سال میتونین ملکتون رو بفروشین. حالا چه جوری به شما برمیگردونن؟ شما با دلار آمریکایی خریدین، باید لیر ترکیه پس بگیریم. حالا تفاوت سندوشا چیه که ما داریم به شما این آفر رو میدیم که بیاین اینجا؟ سندوشا میگه که توی 2 سال این 300,000 تایی که میذارین ملکی رو خریداری میکنیم، میتونین بعد از 2 سال بفروشین، اجاره بدین یا هر کاری که میخواین بکنین. ولی در کشور ترکیه شما بعد از 5 سال میتونین ملکتون رو بفروشین یا اجاره بدین. تفاوتش اینه که بعدش هم پول شما رو ترکیش لیرا بهتون میدن. این تفاوت این 2 تا کشور هستش. خیلی خوب. So, Dr. Began, my next question would be, of course, the viewers would like to know that who is eligible to apply for St. Lucian citizenship? If there's any category or if there's any condition, if you can explain that, please. St. Lucia doesn't have that much category or condition. Whoever doesn't have a criminal record, and obviously we already explained it, but I'm gonna repeat it again. Children between age of 18 till 21 or under 21, they can apply.
or the main applicant, but the main applicant has to be over 18 years old, and then the family members that we just mentioned, and the children between 20 to 30 years old, they can be under the parents' application, and the sibling who are not married, like a brother and sister of the main applicant and the spouse, and also father and mother, and mother-in-law and sister, and the father-in-law also can apply. ओके सो नाजरीन डॉक्टर बेगन हमें बता रही हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी हर एक की नहीं, हर एक बंदे की है। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, उनका कोई ऐसा कोई प्रीवियस जिसका जो उनकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस या कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसमें उनका कोई ऐसा कोई पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। वहाँ पर उन लाइक जो एप्लीकेंट हो वो अबव 18 होने चाहिए ऑब्वियसली, और जो एप्लीकेंट हैं उनकी स्पाउस, उनके बच्चे, उनके भाई बहन, स्पाउस के भाई बहन, उनके एप्लीकेंट के पेरेंट्स और स्पाउस के पेरेंट्स, एप्लीकेंट के भाई बहन और स्पाउस के भाई बहन, हर कोई इसमें शामिल होता है। बट जो कंडीशन है कि वो उनके पास कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन। So, Dr. Begin, if for example, oh sorry, if you can. راجبه اینکه کسانی که کریمینال رکورد نداشته باشن، سوء پیشینه نداشته باشن، میتونن به سندوشا ورود پیدا کنن. بچه‌هایی که زیر 21 سال هستن و همینطور فرزندانی که بین 22 تا 30 سال هستن و هنوز پدر مادرشون ساپورتشون میکنن، و اینکه پدر مادر متقاضی و همچنین برادر و خواهری که هنوز مجرد هستند. تاکید میکنم برادر و خواهری که هنوز مجرد هستند و پدر مادر متقاضی. و همینطور ما یه گزینه‌ای هم اضافه کردیم اگر از اولش رو با ما همراه بوده باشین، همسر متقاضی هم میتونه پدر مادر خودش رو، برادر خواهر مجرد خودش رو بیاره به سندوش. Obviously, they will check. They do due diligence. That they want to know where they get their money and how much assets they have. So this is another one. ओके सो नाजरीन, डॉक्टर बेगन ने भी एक बात ऐड की है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हर एप्लीकेंट का एक ड्यू डिलिजेंस करते हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब कि उनके बारे में हर किस्म की इंफॉर्मेशन वो लेते हैं उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन से, कि वो किस तरह का उनका पैसा जो कमाया है वो कहाँ से कमाया है, और जो पेमेंट वो कर रहे हैं वो किस तरह की कर रहे हैं, और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन वो लेते हैं कि हर चीज़ लिजिट है, हर चीज़ सही तरीके से की गई है, तो उनके लिए हर तरह की एलिजिबिलिटीज़ हैं। So, Dr. Begin, my next question would be to you is that, for example, one of the viewers who are watching us today on Voice of Toronto TV, if they think one of their family members or any of their relatives would like to go for St. Lucian immigration program, how long are they looking at before they can get the citizenship and the passport? First, we have to send the application, and then once we process the application, it takes 1 month for the government of St. Lucia to do their due diligence. Once they approve, then it takes between 3 to 6 months in order to receive their passport. Okay. So, नाजरीन, डॉक्टर बेगन ने हमें बताया है कि अगर कोई जैसे हम लोग जैसे फाइल उनकी प्रोसेस करते हैं तो सेंट लूशियन गवर्नमेंट 1 महीने का टाइम लेती है डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए। फिर जो वंस आपकी जो सारी चीज़ें प्रोसेस, जो ड्यू डिलिजेंस वो लोग करते हैं, वो आप लोगों के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। उसके बाद जब उनको अप्रूवल मिलती है तो फिर 3 महीने से 6 महीने का टाइम है कि आपकी सिटीजनशिप और आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है। अब जैसे कोई बंदा किसी डिफरेंट कंट्री में रह रहा है, उनको उनका पासपोर्ट पहले मिल जाएगा और वो भले बाद में वहाँ पर लैंड करें। सो बेसिकली इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको पासपोर्ट जब मिलता है आपकी अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन से, और फिर वहाँ से आप नया पासपोर्ट अपनी और नई नेशनलिटी लेके आप फिर वहाँ से आगे ट्रैवल कर सकते हैं। Amirali, if you want to translate that, please. پروسه که از اول که اقدام میکنن
حدوداً از زمانی که استارت پرونده میخوره تا پرونده ارسال بشه 1 ماه طول میکشه که دولت بخواد اکسپتش بکنه. وقتی که مورد قبول واقع شد بین 3 تا 6 ماه طول میکشه که به پاسپورت سندوشا دست پیدا کنه. خیلی خوب دیگه. So Dr. Begin, since we are talking about St. Lucia, now what like other countries that are, if like you just said that like in the Caribbean countries, St. Lucia would be the best one. So the country of St. Lucia is like traveling from and to St. Lucia. Like for example, if somebody is going from Pakistan to St. Lucia, so will they receive their passport first, or how is it going to be that they'll be traveling back and forth, or before, like how you wanna your question is if there is not mandated for people who are applying for permanent residency and the citizenship and the passport is not mandated to travel to St. Lucia in order to obtain their passport. Okay. No, we have expert lawyers and expert team in St. Lucia. They will obtain their passport for each family member, and then anywhere in the world we can give them, we handle the passport to the applicants. ओके सो नाज़रीन, डॉक्टर बेगन हमें बताती हैं कि कोई भी इस प्रोग्राम में शामिल जब होना चाहेगा तो वो अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन में ही अपना पासपोर्ट रिसीव करेगा, और अपना पासपोर्ट रिसीव करके वो ट्रैवल करे ना करे, वो दुनिया में कहीं और ट्रैवल करे, इस पर कोई पाबंदी नहीं है. So for example, doctor, my next consequent question would be, so if somebody gets a passport from St. Lucia, does he have to immediately immigrate to St. Lucia, or he's free to travel whenever he feels like? As I mentioned, no, there is no obligation to do that. They don't have to go right over to St. Lucia. Anytime they can travel there and stay and over travel there. anywhere. Yeah, even St. Lucia has a very, very good universities, college over there. If someone wants to study in St. Lucia, we have Canadian, US universities as well. Oh. Yeah. सो नाजरीन, डॉक्टर बेकन ने हमें बताया है कि अगर आपको वहाँ का आपका पासपोर्ट मिलता है, आपको इमीडिएटली वहाँ पर मूव नहीं होना, ऐसी कोई आप पे कंडीशंस नहीं है, आप पे कोई पाबंदी नहीं है. आप उधर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आप उधर नहीं जाना चाहते आप ना जाएं. आप दुनिया में भर में इस सेंट लुशियन पासपोर्ट से ट्रैवल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, हमें नहीं आज इमिग्रेशन की मालूम पता चला तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं. हम लोग HMB कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म से हैं. हमारा नंबर 905-604-0405 और 416-836-9911. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-855-5462. हमारे साथ जुड़े रहिएगा. हम आप लोगों से, हमारा इख्तिताम का टाइम आ गया है. हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ नई एक्साइटिंग इमिग्रेशन की खबरों के साथ. तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा. आपसे फिर मिलते हैं. बाय बाय.